राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और जेडीयू के सांसद जगदीश शर्मा, इन्हें चारा घोटाले में 2 दिन पहले ही दोषी पाया गया था। आज उनके सजा का ऐलान हुआ है। भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई का ये एक महत्वपूर्ण आयाम है, एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जनता की शक्ति और न्याय प्रक्रिया नतीजे तक पहुंची है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। अब लोगों की निगाहें CWG, 2G और कोयला घोटाले पर लगी है कि उसमें भी जो महाघोटाले हुए हैं, जो महाभ्रष्टाचार हुआ है, उसके उन मामलों में भी ऐसे ही निर्णय आएंगे। लोगों की ये प्रतीक्षा है। टुडे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, एक्स चीफ मिनिस्टर कांग्रेस, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार Jagannath Mishra, and JDU Member of Parliament Jagdish Sharma have been sentenced from 4 years to 5 years. They were convicted 2 days ago, and today's decision is the next step of that legal process. BJP thinks that this is very important milestone in the fight against corruption. The whole country was up and against the corruption. They wanted results. And today, the legal process has reached to a destination. We welcome this decision. But now people are waiting eagerly for next stage of verdicts in various bigger scams like the CWG, 2G, coal. They are the monumental corruption. And people are eagerly waiting for the verdict on these cases also. Because unless a clear message is delivered that corruption can't be the mainstay of politics, the politics won't improve. And therefore, BJP and people are eagerly waiting for the decisions in these monumental corruption cases. इन निर्णयों को ध्यान में रखकर ही कांग्रेस ने दागियों को बचाने के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाया था, एड़ी चोटी का जोर लगाया था। लेकिन भारत के महामहिम राष्ट्रपति, उन्होंने तुरंत हस्ताक्षर नहीं किए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमने ऐसे भी दिन देखे हैं कि जब शाम को राष्ट्रपति को कोई अध्यादेश गया है और रात को इस हस्ताक्षर होकर वापस आए हैं। लेकिन प्रणब मुखर्जी है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। देश उसके लिए उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा। बीजेपी ने पहले दिन से अपनी भूमिका और हमला बोला और राष्ट्रपति के दरवाजे खटखटाए। मीडिया और जनता, इन सब के विरोध के कारण कांग्रेस का अध्यादेश का मंसूबा वही रह गया और इसलिए कांग्रेस अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुई। आज पूरा देश कांग्रेस को दोष दे रहा है।
लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस अपने दोष को मानने के बजाय बेतुके तर्क देकर बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों पर ठीकरा फोड़ना चाहती है। आरोप लगा रही है कि हमने स्टैंड बदला, बीजेपी और बाकी दलों ने, और इसलिए हम घटनाक्रम बताएंगे। Congress, as it was knowing the shape of the things to come through verdicts, these verdicts, and to save their own MPs and those convicted representatives, Congress tried the ordinance route, which failed miserably. And we must acknowledge the role played by the Honorable President of the country, because he did not sign the ordinance in haste. He raised certain clarifications after BJP delegation met and opposed it with logic. Or he may have even sought clarifications earlier also. Otherwise, the country has seen before that the ordinance goes in the evening and on dotted lines signatures are sought. But this did not happen this time. So country is grateful to the president. BJP fought right from the beginning. People were up and against, and media also played its role. And therefore the ordinance failed. They had to withdraw. The whole country is cursing Congress, is holding Congress responsible and guilty. Instead of accepting the guilt, now Congress is trying to shift the blame to others, BJP and other parties, saying that they have changed the stand. No, it's wrong. Not only wrong, ये कांग्रेस का एक सफेद झूठ है। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने कभी भी बिल पेश नहीं किया। सर्वदलीय बैठक में कपिल सिब्बल जी ने 4 प्रस्ताव रखे, अल्टरनेटिव, वैकल्पिक प्रस्ताव रखे कि क्या किया जा सकता है, और उन 4 प्रस्तावों पर हर पार्टी ने अपनी राय रखी। तो कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ, कोई कंसेंसस नहीं बना, कोई सहमति उसमें बनने का मुद्दा नहीं था, हर एक ने अपनी राय बताई। जब बैठक समाप्त हुई तब चिदंबरम जी और कमलनाथ जी ने हमारे नेताओं को ये कहा कि ये चारों जो वैकल्पिक प्रस्ताव है वो स्थायी समिति को सौंपने चाहिए, सौंपेंगे। तो कांग्रेस बदली, इस वचन को नहीं निभाया कांग्रेस ने और बिल लेकर आए जो सर्वदलीय बैठक में रखा ही नहीं था, वो बिल सीधा लाए राज्यसभा में, और राज्यसभा ने तुरंत, बीजेपी ने उसमें विरोध किया और कहा कि बिल्कुल मंजूर नहीं, आपने लाया है बिल तो स्टैंडिंग कमेटी में भेजो, बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। तो वो स्थायी समिति में गया। अब ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि लोकसभा में हमने समर्थन किया और राज्यसभा में विरोध किया। गलत। लोकसभा में बिल आया ही नहीं है। और बाद में जो अध्यादेश का रूट उन्होंने अपनाया, अध्यादेश की तो किसी भी दल से, विपक्ष दल से चर्चा की ही नहीं कांग्रेस ने, और अब झूठ बोल रहे। See, this is a complete conspiracy and lie of the Congress that they are mischievously not telling the truth.
Yes, there was all party meeting. All party meeting discussed the issue. There was briefing by Kapil Sibal, and he gave 4 alternative proposals, not the bill. Bill was never put before all party meeting. And every party reacted on all those 4 alternative proposals. So there was no issue of arriving at a consensus or arriving at a unanimity or arriving at a conclusion. Because there were 4 proposals, entirely different proposals, and people reacted on those proposals. And now somebody is saying that there are minutes. This is unheard of. Minutes never went to anybody for confirmation. In Loksabha and Rajya Sabha, the practice is if you speak for even a minute or even if you raise a question, next day we get the mail saying the ad verbatim report, which we have to confirm. Unless we confirm it, it doesn't become minute. I challenge Congress leaders. Show me where the minutes had been prepared and where they were sent for confirmation to any leader. Has any leader confirmed the minutes? So minute की कहानी ऐसी बनावट और सीधे देन कांग्रेस ने अपना रुख बदला. सर्वदलीय बैठक after the meeting of all parties, Chidambaram and Kamalnath assured the BJP leaders that actually these all 4 proposals should go to the standing committee, which was reasonable. But then Congress suddenly changed and brought the bill, which was never discussed in all party meeting. They brought the bill, so we opposed right from that moment. And therefore it went to the standing committee. And now impression is being created through various TV debates by Congress spokesman that there was debate in Loksabha. And BJP and others changed their stand after the Lok Sabha. No, bill never went to Lok Sabha. And then they went for the ordinance route, which they never discussed with any opposition party. So it was a Congress decision. Congress has failed miserably to read the mood of the nation. And it's a Congress strategy to give protection to the convicted MPs and MLAs. BJP has not changed the stand. Congress changed the stand. In the first go and then again. Therefore, it is culpability of the Congress. It is the responsibility of the Congress. They owe an explanation. Instead, they want to shift the blame, which we condemn. दूसरा एक गंभीर मुद्दा है पाकिस्तान सीमा पर जम्मू कश्मीर में केरन क्षेत्र में जो हो रहा है. 23 तारीख से घुसपैठी बढ़ी और उसके खिलाफ एक मानो छोटी लड़ाई हो रही है. बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में सेना लगी है. 10 दिन हो गए, अभी तक समाप्त नहीं हुआ है. कल सेना के अधिकारियों ने कहा कि 30-40 घुसपैठी आई है. तो सारा देश को यही लग रहा है कि 30-40 घुसपैठी है और इतनी बड़ी सेना है, तो इतने 10 दिन क्या हो रहा है. लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 23 तारीख को बताया नहीं देश को कि ऐसा हो रहा है. 24 को भी नहीं बताया, 25 को नहीं, 26 को नहीं, 27 को नहीं, 28 को नहीं, 29 को भी नहीं. और उसी दिन नवाज शरीफ से मिल रहे मनमोहन जी. भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि आतंकवाद और शांति वार्ता एक साथ नहीं चल सकते. लेकिन देश से जानकारी देश को नहीं दी और वहां दोनों नेता मिले. आज देश को ठगा हुआ महसूस होता है ऐसे समय. पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर का वायलेशन बहुत बढ़ गया है.
पिछले 8 साल का अत्यधिक इस साल हुआ है। घुसपैठी बढ़ी है, भारतीय सेना के जवानों के टुकड़ियों पर हमले हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनके सर काट के ले जा रहे हैं। और ऐसे में भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मिले और उसी दिन लड़ाई भी जारी रहे, ये क्या स्थिति है? और आज भी 10 दिन के बाद अगर ये चल रहा है तो कितना गंभीर है मसला। भारतीय जनता पार्टी रक्षा मंत्री से एक स्टेटमेंट चाहेगी कि क्या है परिस्थिति, देश के सामने स्पष्ट करो। और चूंकि वैसे संसद की जो रक्षा मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति है उसका मैं भी सदस्य हूं, तो 9 तारीख को हमारी बैठक है। हम अपेक्षा करते हैं कि उसके पहले ही ये खत्म हो जाए, लेकिन उस दिन वही विषय है कि देश को पाकिस्तान चीन सीमा पर क्या थ्रेट परसेप्शन है और बाकी भी क्या है, तो उसमें हम जरूर उठाएंगे, जो भी अवेलेबल फोरम से उस पर उठाएंगे। The situation in the Keran sector on Indo-Pakistan border in Jammu and Kashmir is very serious and is a very serious matter of concern, because 10 days army is engaged in thwarting the infiltration bid. In a large number of infiltrators and terrorists are coming, supported by the Pak regulars or the Pak special forces. If that is happening, our first question is why this was not told for 1 week from 23rd to 2nd of October. Yesterday, military army explained the situation. Why it remained silent for 10 days practically? And in between, on 29th, Manmohan Singh ji discussed with Nawaz Sharif in New York. BJP is firmly saying always that you can't have peace talks and terror go together. It can't go. But that is what precisely is happening. Pakistan has done many provocative actions along the border in last 1 year. More cross-border ceasefire violations, more infiltration, more ambushes and beheading. So these are all provocative actions by Pakistan, and therefore BJP demands that Defense Minister should take nation into confidence and tell what is the status of that sector and on Pakistan border. तीसरा महत्वपूर्ण विषय, और फिर आपके सवाल कुछ है तो तेलंगाना के मसले में इस सरकार ने जिस तरह से काम किया है उससे तेलंगाना में भी अशांति पैदा हुई है और आंध्र में भी अशांति पैदा हुई है। कांग्रेस के नियत पर लोगों को शक हो रहा है कि ये देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, इसलिए तेलंगाना में लोग रेस्टलेस है। और आंध्र में भाई इनका इरादा क्या है, आगे क्या होगा, बाकी जो उनकी कंसर्न्स है उसके कारण वहां असंतोष है। अटल जी ने 3 राज्यों का निर्माण किया, सबको साथ लेकर किया और शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है ये दिखाया। कांग्रेस ने दिखाया कि कैसे राज्य का विभाजन नहीं करना चाहिए, उसका दर्शन दिया है। हाउ नॉट टू डू इट। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तेलंगाना के पृथक राज्य के निर्माण के पक्षधर है, क्योंकि हमारी वो वैचारिक प्रतिबद्धता है। लेकिन कांग्रेस की कोई प्रतिबद्धता वैचारिक नहीं है, उनको केवल चुनावी फायदे के गणित से वो निर्णय करते हैं, रोकते हैं और कभी आगे बढ़ते कभी पीछे जाते हैं। इट इज द इलेक्टोरल कन्वीनियंस, पॉलिटिक्स ऑफ इलेक्टोरल कन्वीनियंस which guides Congress actions, while BJP is ideologically committed for a creation of separate state of Telangana. But we never said that you put people against people, because we believe that both the state of Telangana and Andhra Pradesh can peacefully coexist and progress rapidly. But Congress has created a situation where both the regions are restless
Nobody knows what is going to happen. And Congress has been miserable. Their own chief minister is up against the high command. Own chief minister, Kiran Kumar Reddy. He is up and against high command. Still he is chief minister. This can happen only in Congress state. He has opposed the very decision of the Congress party, because today, even today, government has not taken any decision. They have not passed the cabinet resolution. They have not moved an inch forward. So, it's anarchy. It is a Congress created anarchy. We were demanding bifurcation of the state. You divided the people. आपने लोगों में विवाद पैदा किया, इसकी अभी उम्मीद नहीं थी. सीमांध्र की जो कंसर्न्स है उसको भी दिल्ली सरकार ने बोलना चाहिए था, उनको एड्रेस करना चाहिए था, और तेलंगाना के निर्माण के बारे में एक विश्वास का माहौल तैयार करके तेलंगाना का भी जल्दी निर्माण करना चाहिए. बट दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज इट्स पॉलिटिक्स फॉर देम. कुछ भी अटल जी का थोड़ा सीखे होते तो ठीक होता, लेकिन इनकी नीयत में वो नहीं है, खोट है. इसलिए हम हमारी भूमिका को कल भी रीइटरेट किया है, हमारे अलग स्टेटमेंट दिया था, आज भी उसको रीइटरेट करते हैं. धन्यवाद. मेरे तरफ से इतना ही है. आपका कुछ विषय है तो इसके बारे में कुछ है तो पहले पूछे एक बार. तीनों यानी यस. With Rahul Gandhi, no, I'll tell you. It is not always what has happened is the only thing to be noticed. The way you do it is also important. And therefore, what we were saying is that you changed the stand, you brought the ordinance, your core committee, your cabinet, they brought the ordinance, they pushed the ordinance route, they never consulted with anybody. And you are blaming others for changing stand. You have changed the stand. And of late you have realized that this is not good way to go ahead. And if you have stopped, that's good. But then you should take the blame. But instead of taking them, you are blaming others. That's the issue. A. And as far as Rahul Gandhi's outburst is saying, we said that this was the most intemperate and immature way of reaction. There are many other ways to communicate and get things done. But this is not done. To the Prime Minister who is already talking to foreign dignitaries while he is in foreign land, to your own Prime Minister, you are denigrating the institute of Prime Minister. You are denigrating the whole constitutional edifice of executive. कौन सुनेगा उनका अधिकारी? कौन सुनेगा विदेश की ताकत? Congress created this duplicity of separation of power. The Prime Minister is in office but not in power. Power rests in 10 Janpat, but there is no accountability and responsibility. So that is what country is paying through noses. अगर पिछले 10 साल में इस देश की दुर्गति हुई है तो ये सत्ता का जो इस तरह से अनैसर्गिक विभाजन हुआ, उसके कारण ये देश भुगत रहा है. यही हमारी प्रतिक्रिया है. नहीं, पीएम का अथॉरिटी को और कॉन्स्टिट्यूशनल एडिफस को उन्हीं की पार्टी, हाँ, नहीं किया. उन्होंने तो उल्टा उनके मान मर्यादा का रक्षण आप नहीं कर रहे, यही बताया.
आप यही कहना चाहते हैं कि पत्रकारों की बात मत सुनो? हाँ, तो वही ना, आप वही कह रहे, भारत का भी पत्रकार का नाम था। हाँ, पहले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुषमा जी ने आज ट्वीट कर पूरा एक आर्टिकल ही एक तरह से ट्वीट से दिया है और पूरा घटनाक्रम को दिया है कि वहां तो बिल आया ही नहीं था, बिल पर चर्चा ही नहीं हुई भाई। 4 अल्टरनेटिव प्रपोजल थे कि कुछ ना करे, सब कुछ बदले, बीच का रास्ता ढूंढे, ऐसे 4 अलग अलग प्रपोजल थे। तो उस अलग अलग प्रपोजल पर हर एक ने अपनी राय रखी, उसका कोई रिजोल्यूशन थोड़ा ही था। नहीं, वही मैं बता रहा हूं। हमारी राय थी कि इस पर बिल और अध्यादेश का तो सवाल ही नहीं था, उस पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि अध्यादेश भी कांग्रेस सोच सकती है, इतना दुस्साहस करेगी। बिल नहीं होना चाहिए, ये हमारी राय थी। जी, नहीं 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 नहीं, आप गलत है। उस समय नहीं, बैक टू बैक 2 निर्णय आए। एक निर्णय था कि 24 घंटे भी आप पुलिस के कस्टडी में जाओगे तो आपको, और चुनाव अभियान अगर चल रहा है और नॉमिनेशन का दिन है तो आप नहीं कर सकोगे। ये जो था मसला, उसके बारे में सबकी एक राय थी, वो तो अलग मुद्दा है और उस पर कोई बहस भी नहीं ज़्यादा हुई, वो नहीं मुद्दा है, तो इसलिए इसकी बहस नहीं थी। यस, absolutely. When we come across the cases of rapes, we say that rapes must be fast tracked. When we come across the cases of corruption, we say the corruption cases must be fast tracked. All the cases must be fast tracked because otherwise you won't get justice. Justice delayed is justice denied. Yes. मैंने जो प्रतिक्रिया दी उसको आप कैसे पढ़ेंगे? यस, यस। ऑर्डिनेंस की तो चर्चा ही नहीं की कि उन्होंने किसी से, ये तो गवर्नमेंट का खुद का डिसीजन है, तो ब्लेम भी उनका ही है। दे मस्ट टेक द ब्लेम। यस, लास्ट। See, there are two different situations. Let us understand. A political campaign, an election campaign is entirely different. And what Congress Vice President did was altogether different because it was their own government. But that arrogance was on display. And that arrogance of power, because power rests elsewhere and the Prime Minister is just in office, so you have gone berserk with such words as nonsense and everything. So this is what people objected to. Especially on the issue of Telangana. Now, the Chandrababu Naidu have come forward to support the Modi candidature. Now, it's a boom for the Bharatiya Janata party. How do you take it, Chandrababu? You take it as a granted one, or still you are likely to get some? See, now the support for Modi is growing in leap and bound. That is why many leaders across the states are giving their opinion. Even in Andhra, the YSR chief also has given his opinion. So this happens. Thank you. Yeah, infiltration bid. Absolutely, it is in shatters. It is failed miserably,
and it could not deliver India the result it wanted because Pakistan is continuously doing this. Sir, last year, Jaram Ramesh had made a statement regarding temples and toilets. He said that there should be more toilets than temples, and the BJP had slammed it. Yesterday, Narendra Modi said almost the same thing, that first toilets and then temples. So now, isn't the Congress is alleging that it's a double standard on the part of the BJP and basically Narendra Modi? How do you say this? I have not seen this criticism from Congress. Digvijay Singh was saying something very different. So, I have not What do you seen. have to say about it? About the same statement which Narendra Modi has made, that first temples, first toilets. He has made it for many times. You read it yesterday only. Thank. वो अलग था. It was comparison. It was comparison. नहीं नहीं यही नहीं. This was not that. नहीं 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 नहीं. This was different. Thank you.